बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम MDCAT पेपर 2012 को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी के पार्ट को उसके आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन से आपकी क्विक रिवीजन भी हो जाएगी और इससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली आस्क्ड इन द पेपर and what is the pattern of the MCQs. So these MCQs will be very much helpful for all types of entry tests, biology, entry test, MDCAT, KMU, MDCAT, NUMS, and all types of the medical related entry test. Question number one is the path of neuron fibers which conducts nerve impulses from the cell body is. अब cell body से जो नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है उस पाथ को हम क्या कहते हैं? दैट इज द एक्सॉन। द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन इज, तो क्रेनियल नर्व्स की जो तादाद होती है 12 पेयर है। अगर टोटल तादाद की बात करें तो 24 और पेयर्स की बात करें तो 12 पेयर्स। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड स्वेलिंग इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लांगेटा। Syphilis is sexually transmitted disease which is caused by the ट्रिपोनीमा पेल्यूडियम। यह एक बैक्टीरियल डिजीज है जो ट्रिपोनीमा पेल्यूडियम से काज होती है। डिस्चार्ज ऑफ ओव्यूम आर सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी और फ्रॉम ऑफ ग्रोफिन फोलिकल इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। तो ओवरी से ग्रोफिन फोलिकल से जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है जिसको हम ओव्यूम कहते हैं उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। सेकेंड meiotic division in the secondary oocyte proceeds as far as the metaphase. Which one of the following differentiate directly into the metriosperm? तो spermatid differentiate directly into the metriosperm. Uterus opens into the female genital tract vagina through the cervix. Each muscle fiber is surrounded by a membrane which is called the sarcolemma. जो मसल की मेम्ब्रेन होती है उसको हम sarcolemma कहते हैं। When calcium ions are released from the sarcoplasmic reticulum, they bind with dash during muscle construction. तो they bind with the troponin. Very important MCQs है। तो जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होते हैं तो वो मसल कंट्रैक्शन के दौरान प्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं। ह्यूमन एंड मेमेलियन skeleton can be divided into two parts, axial skeleton and the appendicular skeleton. Last four vertebrae in humans are fused to form structures called the coccyx. How many bones are involved in the formation of each half of pelvic girdle? So three bones are involved in the formation of each half of the pelvic girdle. Ductless glands are also known as endocrine glands, जबकि exocrine glands जो होते हैं वो duct glands होते हैं। Gastrin is the hormone which is produced by the pyloric region of the stomach. B cells of beta cells of the pancreas secrete a hormone that is called the insulin. तो सम टाइम यहाँ पे अल्फा सेल आता है तो जब अल्फा सेल की बात हो तो फिर ग्लूकागॉन होगा। बीटा सेल secrete insulin जबकि अल्फा सेल secrete the glucagon. Vasopressin and oxytocin are released from the posterior pituitary gland. Antigen is a foreign protein or any other molecule which stimulates the formation of the antibodies. Antibodies are produced by which of the following lymphocytes? तो antibodies हमेशा B lymphocyte से प्रोड्यूस होती हैं और antibodies में जो immunity इन्वॉल्व उसको हम humoral immunity कहते हैं। T lymphocytes become mature and competent under the influence of thymus gland. तो टी लिम्फोसाइट्स को हम टी लिम्फोसाइट्स कहते ही तब हैं कि इनकी जो मैचुरेशन है वो थाइमस ग्लैंड में होती है। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस सिस्टम एंड दे फॉर्म फिजिकल बैरियर। तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो फिजिकल बैरियर का पार्ट है एंड दे एक्ट एज ए डिफेंस सिस्टम। Snake bite is treated with which type of the immunization? So it is treated with the passive immunization, the product of cyclic photophosphorylation
साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में एटीपी बनती है. टोटल एनएडीएच फॉर्म बाय वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल. तो क्रेब्स साइकिल के दौरान जो टोटल एनएडीएच होते हैं उनकी जो टोटल तादाद है वो 6 है. क्रेब्स साइकिल के दौरान एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टोटल 6 एनएडीएच बनाता है. The terminal electron receptor in electron transport chain is the terminal electron transport chain aerobic respiration में ऑक्सीजन होता है. The end product of glycolysis is glycolysis का end product pyruvate होगा. One molecule of FADH2 is produced in Krebs cycle during conversion of the succinate fumarate to fumarate. जब succinate से fumarate बनेगा तो one molecule of FADH भी produce होगा. In recombinant DNA technology, dash are tools for manipulating DNA. So enzymes are used for manipulating DNA. In DNA fingerprinting process, the use of dash produces distinctive pattern on autoradiography or film. Probes for genetic markers produce distinctive pattern. In the recombinant DNA technology, plasmid are used as a vectors. तो plasmid as vector के तौर पर इस्तेमाल करते हैं that carry specific gene. In which process multiple copies of desired genes are produced. तो polymerase chain reaction के दौरान multiple copies बनती हैं. The enzyme adenosine deaminase is missing in persons suffering from the severe combined immunodeficiency syndrome. SCID बोलते हैं इसको. What is the nick of an organism in an ecosystem? So nick is the role played by an organism in its ecosystem. The distinct level or links of food chains are called the trophic level. A relationship between two or more organisms of different species in which all partners get benefit is called the. दोनों को जब benefit होगा तो उसको हम symbiosis कहेंगे. ये एक जनरल टर्म है जो है ना वो रिलेशन की. तो सम टाइम यहाँ पे जो आंसर आता है उसको म्यूचुअलिज्म भी है कि म्यूचुअलिज्म में all the partners get benefited. Bacteria and fungi are example of बैक्टीरिया और फंजाई जो वो डिकम्पोजर्स की एग्जांपल्स हैं. द कॉज ऑफ एसिड रेन इज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर जो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे. When the presence of a gene at one locus suppresses the effect of a gene at another locus, this phenomena is called the epistasis. The gene present at one locus affect the expression of gene at another locus is called the epistasis. So this is the definition of the epistasis. The gene for ABO blood group system in humans is represented by symbol I. When a single gene affects two or more traits, the phenomena is called pleiotropy. जब एक जीन एक से ज्यादा ट्रेट को कंट्रोल करेगा इसको हम बोलते हैं pleiotropy. The comparative embryology of all vertebrates shows development of the gill pouches. In men, sex determination depends upon the nature of the heterogametic male. Population of different species, plants and animals living in the same habitat form a community. ये कम्युनिटी की डिफिनेशन है कि जब डिफरेंट जो पॉपुलेशन हैं पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जब रहती हैं एक जगह पे तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं. द पार्ट ऑफ द बॉडी विच फॉर्म्स a structure and functional unit and is composed of more than one tissue is called. उसको हम ऑर्गन कहते हैं. Question number 45 is a method in which are destroyed by using same living organism or natural enemies is called biological control कहते हैं इसको. Chemical produced by microorganisms which are capable of destroying the growth of microbes is called the antibiotics. Plastids are the only found in the plants. Plasma membrane is chemically composed of lipids and proteins. Endoplasmic reticulum contains a system of latent and then bounded sacs which are named as a cisternae. जो फ्लैटन सेक्स ऑफ मेम्ब्रेन होती हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं सिस्टर्नी बोलते हैं. लिपिड सिंथेसिस मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली. तो लिपिड सिंथेसिस हमेशा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में होती है. राइबोसोम exist in two forms, either attached with rough endoplasmic reticulum or freely dispersed in the cytoplasm.
Exchange of segments between homologous chromosome is called the crossing over. If a person has 44 autosome plus XXY, he will suffer from the Klinefelter syndrome. The ribosomal RNA is synthesized and stored in the nucleolus. In which stage of interphase there is increase in cell size and many biochemicals are formed, though it is in G1 phase. That's a part of the interphase. In Down syndrome, which one of the following pair of chromosomes fails to segregate? Chromosome 21 इसको हम 21 ट्राइसोमी भी कहते हैं. Carbohydrates are organic molecules and contain three elements. कौन से elements हैं? Carbon, hydrogen और oxygen. Which one are intermediates in respiration and photosynthesis both? तो ग्लाइसरॉल्डिहाइड एंड द डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, ये दोनों जो है ना रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट्स हैं. विच वन इज द पेप्टाइड बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा सी और एन होता है. एक का अमाइनो एसिड का कार्बन और दूसरे के जो है ना अमाइनो के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको अमाइनो ग्रुप के दरमियान उसको सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड. Which of the following is an unsaturated fatty acid? तो फोलिक एसिड जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. Which of the following combination of base pair is absent in DNA? तो डीएनए में ए और यू कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि यू से जो आरएनए होते हैं डीएनए में नहीं होता. The type of inhibition in which inhibitors has a no structural similarity to substrate and combined with enzyme at other than the active site is called the non-competitive and reversible inhibition. The inhibitors that bind tightly and permanently to enzyme and destroy their globular structure and catalytic activities. जब permanently bind होगा तो उसको irreversible inhibitors कहते हैं. If the detachable cofactor is an organic ion, then it is designed as. जब organic ion होगा उसको हम क्या बोलेंगे? Sorry, in an inorganic ion. Where if a detachable cofactor is an inorganic ion, then it is designed as activator. In HIV virus, reverse transcriptase converts a single stranded RNA into double stranded viral DNA. This process is called reverse transcription. इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जबकि एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. Lysosomes are unfolding of the cell membrane and are involved in the DNA replication. Most widespread problem of antibiotic misuse is the increased resistance in pathogen. Which of the following component is found in the cell wall of the fungi? तो cell wall of fungi में chitin होता है. The male reproductive part of the flower are called, male reproductive part को हम एंड्रोशियम कहते हैं. Fissiola is the name given to, Fissiola किसका नाम है? लिवर फ्लूक का नाम है. Ascaris is what? Ascaris is diploblastic. During development in animal, mesoderm layer give rise to, mesoderm से muscular और skeletal system जो है वो originate. Polymorphism is characteristic feature of cnidarian. The muscle of the stomach wall thoroughly mix up the food with gastric juices and the resulting semi-solid liquid material is called the chyme. Trypsinogen is converted into trypsin by the activity of enterokinase. In large intestine, vitamin K is formed by the activity of symbiotic bacteria. Goblet cells secretes mucus. Mature mammalian red blood cells do not have the nucleus. In normal person, plasma constitutes about dash percent by volume of the blood. तो 55% जो है ना वो ब्लड में प्लाज्मा होता है. Which vein has oxygenated blood? कौन सी वेन में oxygenated blood होता है? तो pulmonary vein carries the oxygenated blood. What is the residual volume of air which always remains inside the lungs of human? So residual volume is 1.5 liter. In nephron, most of the reabsorption takes place in, ज़्यादा reabsorption proximal tubule में होती है, proximal convoluted tubule. Detection of change in signaling of effect for effector response to the control system is a feedback mechanism. What are three components of mechanism of homeostatic regulators? तो इसमें receptors हैं, control center और effectors, ये तीनों मिलकर homeostatic regulation को control करते हैं. Blood enters the glomerulus through efferent arterioles. तो efferent arterioles blood लेकर आते हैं glomerulus की तरफ. Which portion of nephron is under the control of antidiuretic hormone?
तो डिस्टल एंड कलेक्टिंग डक्ट जो है ना ये एडीएच के कंट्रोल में होते हैं। विच cause of the Parkinson disease in the death of brain cell that produces the dopamine. Thank you so much. This is all about the 2012 paper. In the next lecture, we will discuss the paper of the 2013. Keep watching Biology Learning Zone for more paper.